सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधि मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति तमस्तु मा शांति। विद्विषावति हरि शांति ओम शांति। तत्सत्। हरि ओम तत्सत। तो आज संजय भाई, संजय करेंगे ना सबरी? जी महाराज। अच्छा भाई करो। ये इसमें 3 कन्वर्सेशंस है। आज के जो प्रोग्राम है थोड़ा सा लंबा है कि कोई बात नहीं, 3 इश्यूज हैं, 3 कन्वर्सेशन। चलिए। शुरू करो संजय। जी महाराज प्रणाम। स्वामी शिष्य संवाद में बड़े सुंदर वार्तालाप पढ़ने को मिला। मैं उसकी समरी प्रस्तुत करता हूँ। स्वामी जी इंडिफरेंट हेल्थ में हैं और वो अभी शिलोंग मठ से लौटे हैं, बेलूर मठ में। His feet have swollen and he has been requested by the brother disciples to take and undergo some Ayurvedic treatment. Swamiji has agreed to take the Ayurvedic medicine on the advice of Swami Niranjananandji. He is to begin this treatment by entirely giving up taking water and salt. And hearing this, the disciple asked him, "Sir, it is terribly hot now, and you drink water very frequently. It will be unbearable for you now to stop taking water altogether for this treatment. I shall make a firm resolve, and I shall begin this treatment. The body is but an outer covering of the mind, and whatever the mind will dictate to it, it will have to carry out. At the request of Niranjan, I have to undergo this treatment. Well, I cannot be indifferent to the request of my brother disciples." The Swamiji cheerfully raised the topic of his future mutt for women, saying, "With the Holy Mother as the center of inspiration, a mutt is to be established on the eastern bank of the Ganga. As brahmacharis and sadhus will be trained in this mutt here, so in the other mutt also, brahmacharinis and sadhvis will be trained. The disciple has of concerns and apprehensions and fears and worries. And one of them he started with is saying that in course of time, many corruptions arose during the Buddhist monasteries. The whole country was overrun by great evil practices when women were inducted and allowed into the monastery. So Swamiji said, men and women, there is no much difference. The Vedanta declares that one and the same conscious self is present in all being. Raise the women who are the living embodiment of the Divine Mother. Don't think that you have any other way to rise. Keep admitting people. Raise the women who are the living embodiment of the Divine Mother. Don't think that you have any other way to rise. Women are a disciple raises another concern. Women are a bondage and a snare to me. Swamiji says, in what scriptures do you find a statement that women are not competent for knowledge and devotion? In the period of you will find that in the Vedic or Upanishadic age, Maitreyi, Gargi, and other ladies of revered memory have taken the places of rishis through their skill in discussing about Brahman. In an assembly of 1,000 Brahmans who were all erudite in the Vedas, Gargi boldly challenged Yajnavalkya in a discussion about Brahman. Since such ideal women were entitled to spiritual knowledge, why shall not the women have the same privilege now?
all nations have attained greatness by paying proper respect to women. Manu says, where women are respected, there are God's delight. There the God's delight. And where they are not, there all works and efforts come to naught. They have to be raised first, and an ideal mutt has to be started for them. The disciple raised another concern, saying that you sharply criticized. You are not logged in. I can't understand. I can't bear with all this. Recording in progress. क्या हो रहा है संजय? Just a minute. Just a second. सब हम लोग देख रहे हैं गड़बड़ी हो रही है. You sharply criticized the tantras. Now, by supporting the worship of women as taught in the tantras, you are contradicting yourself. Swamiji replied, I did not denounce the mother worship of the tantras or even the real Vamachar. The purport of the tantras is to worship women in a spirit of divinity. I never objected to the worship of women who are the living embodiment of Divine Mother, whose external manifestations appealing to the senses have maddened men, but whose internal manifestations, such as knowledge, devotion, discrimination, and dispassion, make man omniscient, of unfailing purpose, and a knower of Brahman. Shaisha prasanna varda nrinam bhavati muktaye. See, when pleased, becomes propitious and the cause of the freedom of man. Without propitiating the mother by worship and obeisance, not even Brahma and Vishnu have the power to elude her grasp and attain to freedom. Therefore, for the worship of these family goddesses, in order to manifest the Brahman within them, I shall establish the women's mutt. Swamiji continued to his further points raised of fear, apprehension, and concern. Women disciple of Sri Ramakrishna, with their help, I shall start this mutt. The Holy Mother will be their central figure, and the wives and daughters of the devotees of Sri Ramakrishna will be its first inmates. Disciple again raised that general public, his apprehension about general public being helpful in this work. Swamiji said, no great work has been done in the world without sacrifice. At present, I shall start the mutt in this way. Later on, you will see that after a generation or two, people of the country will appreciate the worth of this mutt. My women disciples will lay down their lives for it, casting off fear and cowardice. You also be helpers in this noble mission and hold this high ideal before all. You will see it will shed its luster over the whole country in time. Other matters such as sieving, culinary art, rules of domestic work, and upbringing of children will also be taught, while japa, worship, meditation, etc. shall form an indispensable part of the teaching. Those who will be able to live here permanently, renouncing home and family ties, will be provided with food and clothing from this mutt. Those who will not be able to do that will be allowed to study in this mutt as day scholars. The elder brahmacharinis will take charge of the training of the girl students in brahmacharya. After 5 or 6 years training in this mutt, the guardians of the girls may marry them. If deemed fit for yoga and religious life, with the permission of their guardians, they will be allowed to stay in this mutt, taking the vow of celibacy. These celibate nuns will in time
be the teachers and preachers of the mud. Through such devout preachers of character, there will be the real spread of female education in the country. So long as the students will remain in association with this mud, they must observe brahmacharya as the basic idea of this mud. Spirituality, sacrifice, and self-control will be the motto of the pupils of this mud, and service or seva dharma the vow of their life. Swamiji continued, they must be given education and left to themselves. After that, they will act as they think best. Even after marriage and entering the world, the girls educated as above will inspire their husbands with noble ideals and be the mothers of heroic sons. Disciple raised a fear of violent opposition against this in the beginning, and Swamiji said, let it be. What is there to be afraid of in that? Opposition to a righteous work initiated with moral courage will only awaken the moral power of the initiators the more. That which meets with no obstruction, no opposition, only takes men to the path of moral death. Struggle is the sign of life. In the highest reality of the Par Brahman, there is no distinction of sex. We notice this only in the relative plane. There may be difference between men and women in their real nature. Outwardly, there may be difference between men and women, but in their real nature, there is none. Even if even one amongst the women became a knower of Brahman, then by the radiance of her personality, thousands of women would be inspired and awakened to truth, and great well-being of the country and society would ensue. Disciple appreciates the words and insights and ideas of Swamiji, and Swamiji says, when you will realize that all illumining reality of the Atman, then only will you look upon all women as the veritable manifestation of Brahman. If the women are raised, then their children will by their noble actions glorify the name of the country. Then will culture, knowledge, power, and devotion awaken in the land. Disciple brought the concerns about present female education, in which he notices Western modes of living, but it is not clear how far they are advancing in their spirit of renunciation, self-control, austerity, brahmacharya, and other qualities conducive to Brahmajnana. Swamiji said, in the beginning, a few mistakes like that are unavoidable. When a new idea is preached in the country, some failing to grasp it properly go wrong in that way. But what matters it to the well-being of society at large? Well, those who are pioneers of the little bit of female education that now obtains in this country were undoubtedly very great-hearted. But the truth is that some defect or other must creep into that learning or culture which is not founded on a religious basis. But now female education is to be spread with religion as its center. All other training should be secondary to religion. Religious training, the formation of character and observance of the vow of celibacy, this should be attended to. Founders of all good undertakings, before they launch on their desired work, must attain to the knowledge of the Atman through rigorous self-discipline. Disciple shares his observation that many educated women spend their time in reading novels and so on, and particularly talking about the East Bengal region and some literatures in that part of the Bengal. And Swamiji says, listening all that, ours is to do good works in our life, hold an example before others.
Yes. हो गया? क्या हुआ? थोड़ा सा और कितना है बचा? बस। एक ही टॉपिक लिया अभी तक तुमने, दो और दो एक ले section लिए, दो और ले है ना? Let anybody say what he likes, don't contradict him. In the world of Maya, whatever work you will take up will be attended with some defect. Sarva arambha hi dosena dhumen agni rivavita. All works are covered with defects as fire is with smoke. You must go on doing good work. And what is this good work asked by disciples? Swamiji said, whatever helps the manifestation of Brahman is good work. Any work can be done so as to help, if not directly, at least indirectly, the manifestation of the Atman. But following the path laid down by the rishis, that knowledge of the Atman manifests quickly. In all ages and climes, freedom is sure to be attained by jivas ultimately, for the Atman is the real nature of the jiva. Can anybody give up his own nature? If you fight with for 1,000 years, can you drive it away from you? It will always remain with you. And disciple refers the Sankara's name and says karma is antagonistic to jnana, as referred by Shankar. Swamiji says Shankara, after saying so, has again described karma as indirect help to the manifestation of jnana and the means for the purification of the mind. But I do not contradict his conclusion that in transcendent knowledge, there is no touch of any work whatsoever. When you will realize the Atman, the doing or non-doing of work will be within your control, and whatever you will do in that state will be good work, conducive to the well-being of jivas and the world. With the manifestation of Brahman, even the breath you draw will be to the good of jiva. Then you will no longer have to work by means of conscious planning. Disciple raises the and says, I hear that you are living on milk for the last 6 or 7 days. Swamiji says, yes, at the earnest entreaty of Niranjan, I had to take to this medicine. I cannot disregard his request. Disciple says, the treatment is doing you good, I hope. Swamiji said, that I don't know. I am simply obeying the orders of my brother disciples. Despite his spare food and scanty sleep, Swamiji is very active. A few days ago, a new set of the Encyclopedia Britannica had been brought for the mutt. Seeing the new signing volumes, the disciple said to Swamiji, it is almost impossible to read all these books in a single lifetime. He was unaware that Swamiji had already finished 10 volumes and had begun the 11th. Swamiji said, what do you say? Ask me anything you like from these 10 volumes and I will answer you all. And that got verified. Being examined, Swamiji not only reproduced the sentences, but at places the very language of the difficult topics is selected from each volume. The disciple, astonished, put aside the book, saying, this is not within human power. Swamiji replied, simply by observance of strict brahmacharya, all learning can be mastered in a very short time. One has an unfailing memory of what one hears or knows but once. It is owing to this want of continence that everything is on the brink of ruin in our country. The disciple says that still it looks very superhuman and supernatural. And while this conversation is going on, Swami Brahmanand entered the room and said to the disciple, Swamiji is unwell, and instead of trying to keep his mind cheerful by light talk, you are making him talk incessantly. The disciple was abashed, but Swamiji said to Swami Brahmanand, keep your regulation of Ayurvedic treatments aside. These are my children, and if my body goes in teaching them, I don't care. Disciple says, but sir, I think talking about the literatures prevalent those days, he is bringing the matter of Michael, and he was
very fond of a bombastic style. Swamiji said, well, if anybody in your country does anything new, you at once hoot him. First examine well what he is saying, but instead of that, the people of the country will chase after anything which is not quite after the old modes. Thus, speaking on the object of Michael, he said, go and get the Meghna Bandh Kavya from the library downstairs. On the disciples bringing, it is said, now read, let me see how you can read it. Now, can you say which portion of the Kavya is the best? The disciple failing to answer, Swamiji said, that portion of the big book which describes how Indrajit has been killed in battle and Mandodari, beside herself with grief, is dissuading Ravan from the battle. That is the most finely conceived portion of the book. Come what may, I shall not forget my duty. Whatever the world remains or dissolves, these are the words of a great hero. Inspired by such feelings, Michael has written that portion. Reading from scriptures or hearing from the lips of the preceptor, one has some idea of it. But when the hard lashes of the bitter sorrow and pain of the world make the heart sore, when on the death of one's near and dear relatives, man thinks himself helpless, when the impenetrable and insurmountable darkness about the future life agitates his mind, then does the Jiva pant for a realization of the Atman. Therefore, is sorrow helpful to the knowledge of the Atman. But one should remember the bitter lesson of Ji. So this is all the difference between men and animals. That which is nearest is least observed. The Atman is the nearest of the near. Therefore, the careless and unsteady mind of man gets no clue to it. That is it. Thank you. Good. Actually, portion काफी बड़ा है, 22 pages है ना, 22 pages है. जी. And then there are three aspects. First is, of course, and second is women education, etc. is the important part. And the third was about Michael Medusas and dust, etc. उनके literature इत्यादि के बारे में. There are three particular aspects in this particular time. And we have discussed it. Now we can have this discussion on it. Okay? Yes. So पहले है those who give the as I get the answer the question, I prepare the answer. First was Itu Ghosh. Come on, Itu Ghosh. What happened, Sanjay? Itu Ghosh क्या हुआ? नहीं दिख रही है. चली She is not on the थी. she is not on the screen. है वो माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. ईतू मैम आप अनम्यूट कर लीजिए. Oh yeah. Ituji is not on the screen. No, she has come on the screen. He has come? Yes, she has come on the screen, but it is No, the screen, mute. I can see her room, but she is not visible. she is not there. ओ तो अभी दूसरे किसी को शुरू कर लें, she will join in some time. कुंडू के कुंडू. Maharaj, Pranam Maharaj. हाँ भाई. Maharaj, the first question, page 212. It said, women are a bandage and a snare. I'm sorry, actually, just wait a minute. Women are bondage. By mistake, it has become A. Okay. Women are a bondage and a snare to men. Is the opposite also not true? Very true. Absolutely true. औरतों को गालियां दे रहे हो, लेकिन the same problem with women also. The men are a snare, men are attractive. That is true. True, very true. Okay, ma'am. Then page 213.
While internal manifestations like knowledge, devotion, discrimination, and discretion are associated with women, are they not intrinsic qualities to all beings? Yes. Oh, they are women with disregard. That's why Swamiji is emphasizing that these are the intrinsic qualities of women. As a matter of fact, these are the intrinsic qualities of men also, everyone. ये तो context में this reference to context Swamiji is speaking, that's why it appears he is talking about women. But no, they are the instinctive qualities of all human beings. Okay. ठीक है. Then page 219. Whatever helps the manifestation of Brahman is good work. How do we perceive the manifestation? Where is it manifested? In the doer, the receiver, or in the act itself? Primarily in the doer. If I do good work, my Yes, mind becomes good, my action becomes good. So basically, it is in the doer that manifestation it is manifested. But also in the act भी तो अच्छा होगा. और जो receive किसी का करेगा वो benefit भी तो हुआ. अच्छा होगा. Receive होगा उसको भी तो होगा. यानी जैसे doing सेवा कर रहे हैं. तो सेवा करने के लिए जो सेवा कर रहा है उसको भी तो अच्छा बनना पड़ेगा. और जो सेवा कर रहा है, किसकी सेवा किया जा रहा है, उसमें तो हम मैनिफेस्ट करने का प्रयत्न कर ही रहे हैं. लेकिन बेसिकली जो कर रहा है, the person who is doing, in him the maximum manifestation of divinity या perfection takes place. The highest value, maximum value, highest value manifest maximum in the doer. Of course, it is in the whole act. Any difficulty? No, महाराज. But वो manifestation हमें समझ में कैसे आता है? नहीं, manifestation यानी मैं पहले selfish था. अब मैं जब किसी की सेवा करने लगा, तो मैं थोड़ा unselfish बना तो. The difference हुआ कि नहीं? तो खुद ही परसीव कर सकते हैं कि चेंजेस हो रहा है. हाँ, वो तो होगा ही. 5 साल अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली सेवा करे तो 5 साल पहले जैसा था 5 साल के बाद में वो बदल गया. उसका इंप्रेशन पड़ेगा तो. और जो काम कर रहा था वो भी तो बदल जाएगा ना. काम हो रहा था अनसेल्फिश हो गया, और जिसकी सेवा कर रहे थे वो भी ठीक हुआ. वो सेकेंडरी है दोनों चीजें. प्राइमरीली इन द डूअर. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Then page 226. Uneasy at Swamiji's profound abstracted mood. I understand why we feel uneasy or afraid when our superior remains serious. Is the uneasiness mentioned here is qualitatively different? Basically the same. But we are not afraid of you. Uneasiness a person प्रश्न है. वो uneasiness basically remains the same, but it varies from individual to individual. अगर कोई आदमी जैसे आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने में दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो he becomes uneasy. Yes, महाराज. या काम नहीं हुआ है तो अनईजी हो गया, या काम करने में दिक्कत हो गई अनईजी हो गया. तो बेसिकली तो अनईजीनेस से नेचर है मानव का, मैन का. बट व्हेन यू टॉक ऑफ स्पिरिचुअल अनईजीनेस, इट इज ऑफ ए हायर क्वालिटी.
मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, यू बिकम इजी अनइजी। मैं अभी सेवा नहीं कर सका, यू बिकम अनइजी। Now this is basically in a way it is a bit higher because the goal is different, the means are different, etc. महाराज नहीं, एक मेरा महाराज एक मिनट, एक मेरा प्रश्न क्वेश्चन एक मिनट, मैं मेरा क्वेश्चन समझा नहीं पाया महाराज। जैसे when I am dealing with boss, afraid of him, so when he becomes serious, I become uneasy. But I am not afraid of you at all. But if you become serious, I become uneasy. Why does it happen? No, there can be hundreds of ways of uneasiness. Something, depending upon the ideal, the person, we are, there are three levels, isn't it? One is the goal or the individual in which we are dealing. One is our dealing, and third is ourselves. Okay. Now, if we find that there is some problem in myself, I become uneasy. When I am working and doing something, that action I am doing, and I find there is difficulty, I am uneasy. And when the individual with whom I am dealing, there is some problem there, I become uneasy. I couldn't really understand, uneasiness is a natural phenomena taking place every time. Okay, so it is basically a psychological phenomenon which is within the self rather than which is outside. Oh, yes, it's not it is. Someone people in the same position in which you become easy, the other person will not be uneasy. Okay. Yes. Maharaj, I have one question here. Yes. What I'm getting is feeling uneasy is different than a feeling of guilt, Huh? or the same. Guilt. What is the second thing you said? Hate. Second point क्या बोले? Maharaj, uneasiness is different from what? Guilt. Guilty feeling. Maharaj, she is saying is feeling uneasy same as feeling guilty. No, they were different. what is the difference, Maharaj? The guilty is when if I have done a sin, something wrong, it is individual. It is before with the subject. But uneasy you can feel with the object. Uneasy you can feel with the action, anything. So many places. Okay. Got your point? मेरा भी Uneasy बहुत general है, general question है, general idea है. मेरी बात सुन रही महाराज? हाँ, Means guilt is a negative feeling and uneasy is for the positivity. No, all feeling. Uneasiness is a बहुत व्यापक subject है, word है. Okay. अरे बारिश होने वाली थी, नहीं हुई तो अभी become uneasy. हाँ, uneasy हो जाता है. The uneasy word जो है वो बहुत common use होता है. और जहाँ तक अपना है hate, अपने हमने दोष किया है तो वो दूसरा आइडिया है. Guilty feeling is very different. It is also a type of uneasiness. Uneasiness is a very broad question, वो idea. So don't worry about that. महाराज जी गिल्टी तो तब फील करेंगे जब हमने गलती की हो. नहीं वो इसे uneasiness से कोई लेना देना नहीं. हाँ. चलो महाराज मैं पास स्टेज बोल रहा हूँ. बोलो. बात सुन रही है मेरी बात महाराज? नहीं बात सुनो ना, बोलो. अच्छा महाराज, मेरा भी क्वेश्चन था इसी रिलेटेड टू. मेरा ये क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर तो कहता है कि आप टेंशन मत लो, लेकिन हमें ध्यान अच्छा ना हो टेंशन हो जाती है, गलती हो जाए फिर टेंशन हो जाती है. तो क्या करें दोनों के बीच में, कैसे? ये ये साधना का विषय है. ये एक दिन में नहीं होता. हाँ जी. तो ये एक दिन में नहीं होता. जो लोग प्रयत्न तो करते रहना, आप दूसरे संसार के काम करते रहते हो और उसमें तो गलती हो, मुश्किल हो तो भी चलता रहता है. तो उस प्रकार का कभी ध्यान अच्छा होगा, कभी ध्यान
बुरा होगा, ठीक नहीं होगा, तो ऐसा तो संसार में चलता ही रहता है, ध्यान में भी चलता रहता है। चलते ही रहता है। इसमें अनईजी करने की क्या बात है? मन को डिस्टर्ब क्यों करते हो? उसके लिए इतना ज्यादा नहीं करना। हाँ, ये रखो कि आगे से ध्यान रखो कि क्यों हमारा ध्यान अच्छा नहीं हो, जी उसको ठीक करो और क्या। राइट। अच्छा, चलो, ये तो गोट आई के नहीं आई? आ गई। जी प्रणाम महाराज। आ गए। चलो, हाँ। हाँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, with the manifestation of Brahman, even the breath you draw will be to the good of Jiva. Then you will no longer have to work by means of conscious planning. So my question is this manifestation and the realization both are the same thing? देखो, ये दो वर्ड्स जो है वो डिफरेंट केयरफुली समझ लो। जी। रियलाइजेशन है दैट समथिंग व्हिच यू एक्सपीरियंस। हाँ जी। हाँ, मैंने मिठाई खाई है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। एंड जी। मैनिफेस्टेशन, मैं उसके बाद बता रहा हूँ लोगों को कि ये मिठाई मैंने खाई है। दैट इज द मैनिफेस्टेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा। मैंने दूध पिया है, ये हैव अ रियलाइजेशन। और उसके बाद स्ट्रेंथ खाई, ये मैनिफेस्टेशन हुआ। अच्छा। So there are different, two words itself, the meaning itself is different. हाँ। Manifest करना, यानी first is realization. जी, and then manifestation. Okay. Realization is experience. ठीक। Manifestation only by उसके बाद में तो manifest होगा, expression. जी। चलो, second question. जी, my second question is, but when you are bereft of the body, consciousness and devoted to the Atman and live in the Atman. So my question is, how to live in the Atman? Is it like, is it like thinking always about Atman? So you see, I am a monk. जी। है ना? जी। Do I always go on thinking I am a monk, I am a monk, I am a monk? No. No. Not I am monk, but about Atman. No, same thing. Oh, okay. So when you see, you get when you find you will Sri Ramakrishna. If someone addressed him as Ramakrishna, he will go, okay, what are you talking? I am mother's child. Becoming a child, a bachcha jo hai wo usko, he is fully conscious that he is a child of the mother, isn't it? Okay. Similarly, Sri Ramakrishna was always conscious that I am child of Divine Mother. Similarly, I will be always conscious without thinking even that I am an Atman. Oh. It is an This is very deep thing, very great thing. It is a nature which we realize. It is an awareness, Maharaj, right? You can't even speak the word. You are there. That's all. Okay. We don't thinking that I am a man or I am a woman or I am a monk. Similarly, you don't go on thinking that I am an Atman. It's very, that exactly is the realization. That's why it is said you go on meditating. Once you have an experience, again you go on practicing, till it becomes as natural as I consider myself a body. Oh, it's very difficult thing. Very difficult. Yes. As natural as I consider myself. Ji. That is the actual, when you become one with Atma. Okay? Ji. Shivani? Ji. Pranam Maharaj. Shivani. हाँ जी महाराज प्रणाम. Only one. हाँ जी महाराज, only one question. Page number 222. Care should be taken that such books do not come into the hands of boys. So how this is possible in today's world of mobile phones?
very difficult, very difficult, very difficult. चिल्ड्रन बच्चों के हाथ में है, जो भी चाहे वो देख सकते हैं। यूट्यूब है, क्या क्या है, सब अगली चीजें, गंदा सब कुछ भरा हुआ है। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स आल्सो। I can't, I don't have any answer. You are teacher, you are teacher, you are in the world, you have to find out this only yourself. I thought to take your guidance, so that's why. Very difficult, very mobile. Without mobile, no one can live nowadays, you know. जी। और छोटे बच्चे भी हैं तो जो जेब में मोबाइल होता है, वो फटाफट जब उठाया देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। जी जी। रिपीटेडली बच्चों को बोलना पड़ेगा कि डोंट सी इट, वेरी बैड, ऐसा करना पड़ेगा। And moreover, parents are also very much worried about this habit of children. क्या करोगे? लेकिन पेरेंट्स ही मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, फिर then how can the parents be? First the parents should be. No. The thing is, nowadays online studies are there, na? So it is the requirement of the day also. They should be given only that much time. Jab online. Yes, that much access and all. Then they should again deposit it back to the parent like that. If I may say something on this, since it's a question of opinion, the thing is, Maharaj, during our time also, these books, when he says should not go into the hands of the children, we all have written comics, usko hide kar lete the apne textbooks mein, but we knew that these are not correct. And those parents who kept a check on what the children are doing, they could somehow control. Like basically, the children should realize that what he is doing is not correct. Temptation आ गया, थोड़ी देर पढ़ लिया. Similarly, mobile या TV या all this media is the parents who are first addicted to it, and then we are blaming the children are playing. I know of child rearing where just the child will eat. You are trying to distract him by giving a mobile in his hand और YouTube देखना सीखा तब से, ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम से सीख। अब ये देखें, वही तो मैंने कहा कि ये तो पेरेंट्स। That is true. Parents' role is very much important. Only they can stop. Yes, parents. महाराज जी, एक सेंटेंस में मैं कहना चाहता हूँ, जो कि मुझे आपके द्वारा सालों पहले कहा गया था कि असली घी होगा और आपके पास रखोगे तो पिघल के ही रहेगा। तो आज की ये न्यूसेंस वैल्यू करप्ट करने के लिए ही पैदा हुई है, क्योंकि बच्चों को आप ये थोड़ी कह सकते हो बेटा ए मत देखना बी मत देखना, जहां बोले नहीं कि वो ए पहले देखेगा और बी बाद में देखेगा। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो। सतीश वेग आ जाओ। सतीश तो ट्रेन कार में है जी। यस, तो फिर आगे चले। सतीश तो आगे सतीश जब आगे हाँ आगे स्क्रीन पे तो आगे। हमारे ड्राइव कर बाद में पूछूंगा। अच्छा, बाद में पूछोगे, ठीक है। चलो दिलीप भाई जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। मेरा पहला सवाल है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, कि जब स्वामी जी ये जानते थे कि वे आयुर्वेद को नहीं मानते हुए एलोपैथी को मानते हैं, फिर भी उन्होंने निरंजनानंद जी द्वारा, स्वामी जी द्वारा कहा जाने पर उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया, नमक लेना बंद कर दिया और सिर्फ मिल्क पे 8 दिन तक रहे। नाउ माय क्वेश्चन इज नॉट दैट कि वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, बट द क्वेश्चन इज कि उन्होंने ये जानते हुए भी स्वामी जी को खुश करने के लिए नमक और पानी छोड़ दिया और दूध पे रहे। इसके पीछे उनका भावार्थ क्या था, हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए कि स्वामी जी जो भी करते हैं वो सही करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे उनका भावार्थ क्या था, कि भाई चलो तुम कह रहे हो इसलिए मैं आयुर्वेद कर लेता हूँ, भले मुझे उनके जरूरत नहीं कह रहे, वो नहीं है।
आयुर्वेद में है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे क्लियर लिखा कि डजंट बिलीव इन आयुर्वेद। तो क्लियरली लिखा है। हाँ लिखा है, ये मैं पढ़ता हूँ। स्वामी जी वो Oh, it will take a time. नहीं, ऊपर ही लिखा है। मैं लिखा पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है। My idea is that it is better even to die under the treatment of a scientific doctor than expect recovery from the treatment of laymen who know nothing of modern science but blindly go by the ancient books without gaining a mastery of the subject, even though they may have cured a few cases. This is a different thing. This is not his. ये मेरा महाराज जी सिर्फ यही जानना चाहते थे कि यदि आज हम ये कहें कि हमें कोई चीज मंजूर नहीं है, लेकिन क्योंकि दोस्त है और उसने कुछ कहा तो हमने मान लिया, दैट इज समथिंग रॉन्ग। ये तो दोस्त को खुश करने के लिए होता है ना भाई। ये एक रीजन, देखो रीजन के ऊपर, विचार के ऊपर प्रेम भी तो है ना जी। कभी कभी विचार में आपको लगता है कि ये गलत है, लेकिन बीबी कहती है तो कर लो भाई, क्या करें। हाँ। मित्र ने कहा है भाई कर लो, क्या करें, और मैं मानता हूँ क्या करें। उसको खुश करने के लिए हम कितनी चीजें हैं दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। That is the only meaning out of it we have to take out. ऐसा लगता है कुछ नहीं। ओके महाराज, कथामृता में भी ठाकुर जी ने कितने तरह के ट्रीटमेंट लोगों का एक्सेप्ट किया। आई मीन सिर्फ उनके प्यार की वजह से। ओके गुड। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 212। सेकंड क्वेश्चन, yes, second question, page number 212. Maharaj ji, Buddhist religion how flourished in Japan, China, Thailand and other countries? Are there no corruption in much these countries? I don't know anything about it. मुझे बुद्ध धर्म के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, यहाँ पे भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब मैं कुछ जानता नहीं, जो थोड़ा बहुत किताब पढ़ा है बस। वहाँ पे करप्शन था कि नहीं था कि नहीं था कि नहीं, कैसे चला गया, क्या हुआ, ये कुछ नहीं मालूम। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हिंदुस्तान में स्थिति गंभीर हो जाने से बुद्ध धर्म खत्म हो गया करीब करीब, पर यहाँ पे फ्लरिश हुआ तो वहाँ क्या करप्शन नहीं रहा होगा, पता नहीं बाबा, मालूम। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 212. Maharaj ji, Smritis are written as per the scriptures and Vedas, which has passed on from generation to generation. And in our scriptures, the status of woman is higher than men. Then how Smritis have written making differentiation between man and woman? देखो ऐसा है कि वेद जो है वो सबसे पहले है। हाँ। और स्मृति जो है 1-2 हजार वर्षों के बाद में जब परिवर्तन हो गए समाज में, उसके बाद में समाज के अनुसार उनको फिर से स्मृतियां जो है वो बात। पर ये वेद का ही ट्रांसलेशन होगा ना महाराज। लेकिन वेद को देश काल के पात्र के अनुसार मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अच्छा, अभी तुम अगर वेद को पढ़ो तो उसके अंदर तो कर्मकांड की बातें बहुत सारी हैं, क्या समझ में आएगी तुमको, कुछ लाभ होगा उसका? नहीं। तो उसको हमको आज देश काल के पात्र के अनुसार करना पड़ेगा ना जी, तो इसलिए ये स्मृति बन जाती है। आज के जमाने में फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे स्वामी श्री रामकृष्ण के उपदेश और श्री स्वामी विवेकानंद के उपदेश जो है ये स्मृति है आज के जमाने में जी। ये भी वेद पे ही है, वेद के विरोधी नहीं है जी। लेकिन अब तो मोटर गाड़ी में घूम रहे हैं, सब जैसे कर रहे हैं, उसके अनुसार उनको मैनिफेस्ट बताना पड़ेगा। अच्छा, ये बात जैसे उस जमाने में मनुस्मृति होता था वो अब चेंज हो गया, देयर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। महाराज स्मृति के बदले ये तो श्रुति है। क्या कथामृत और स्वामी जी का जो है
वो ठीक है, है। वो स्मृति बता रहे हैं, वो तो जैसे रामायण महाभारत ये सब स्टोरी के उपलक्ष्य में जो करते हैं, स्टोरी अरे के द्वारा अभी समझाते हैं। देखो श्री रामकृष्ण के उपदेशों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देश का मैंने कैसे काम करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये जिसे हम स्मृति कहते हैं, उनकी बातें भी हैं और श्रुति भी है। तुम्हारी बात ठीक है। What you say is good. जी महाराज। Swami ji, in the Bhagavad Gita also there's a differentiation and women have been given a lower role. It's the essence of the Upanishads. So that means it was a misrepresentation, not to be. ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ये जो स्क्रिप्चर्स हैं ये देश काल पात्र के अनुसार इसके अंदर मैनिफेस्टेशन होते हैं। श्री कृष्ण ने जो कहा उस जमाने के अनुसार बात बताई, ये देखना ध्यान रखना चाहिए। So they are a mixture of Shruti and Smriti in a way. चलो नेक्स्ट महाराज, मेरा एक प्रश्न है, इतना वीमेन मैन में एक ही आत्मा देखने का, पर अभी भी बेलूर मठ में शिवरात्रि और काली पूजा में लड़कियों को नहीं रहने देते हैं 10 बजे के बाद। वो आप लेटर भेज दीजिए। स्वामी जी ने रूल बनाया तो वो चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी। जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट महाराज को एक लेटर भेज दीजिए। अच्छा हम लोग का जैसे इंफीरियरिटी लगता है, 10 बजे जैसे पूजा शुरू हुआ सब लड़कियां बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। नहीं तो आप लेटर लिख दीजिए ना हमको, मेरे को देखो ये चीजें जो है ना मैं कैसे जवाब दूंगा, सोचो। हाँ ठीक है महाराज। तो फिर मुझसे पूछने के बदले वहीं लिखो। ओके यस महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जी, स्वामी जी believes in tantra. Which type of these tantras? Because what our knowledge is for tantras are not good. ये स्वामी जी तंत्र पे विश्वास करते थे, ये कौन से तंत्र थे? क्योंकि तंत्र तो हम सुनो बेसिकली मातृ पूजा, ये तंत्र जो है ना ये बाद में मैनिफेस्ट हुआ, यानी ये पुराणों के जैसे पुराण डेवलप हुए उसे तंत्र भी डेवलप हुए हैं और इनके अंदर पात्र के अनुसार कुछ कई बातें लगाई गई। जैसे आदमी का मन जो है वो काम में ज्यादा लगने लगा। अच्छा तुम भोग करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आ जाओ, तुम्हारे काम के द्वारा ही तुमको भगवान के साक्षात्कार हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने वामाचार पूजा की, यानी एक स्त्री को बिठा के उसकी पूजा की। उसकी इच्छा तो मन तो बार बार स्त्री में जाता है ना उसका, तो उसको कहा चल तो स्त्री में मन जा रहा है, बैठ चल ये अपनी पत्नी की पूजा कर। तो इस प्रकार से शराब की इच्छा है तो ठीक है, तो शराब तो पीना है ना, माँ जगदम्बा को ऑफर करके शराब पी, और छोड़ने वाला तो है नहीं शराब। तो ये इस प्रकार से तंत्र ने हमारे मानव के जो दोषों हैं उनको पकड़ के और जो साधनाएं बनाई है उसको हम तंत्र कहते हैं। अब दिलीप भाई समझ में आई कुछ बात? नहीं, कुछ समझ नहीं आई महाराज। ये यहाँ पे महाराज ये स्वामी जी कहते हैं, आई डिड नॉट डिनाउंस द मदर वर्शिप ऑफ द तंत्रस। तंत्र द्वारा हमने स्त्री को बना के उसकी पूजा करना। नहीं क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रहा। पहले वेदों में तो मातृ पूजा नहीं थी। मेरा तो आवाज आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है क्यों नहीं? नहीं आ रहा, आवाज नहीं आया। टूटी हुई आवाज आपकी, टूटी हुई। अब भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो जैसा है चलाइए। जी जी ऐसा है हाँ कि देखो समय के अनुसार शास्त्र चेंज होते हैं। जी अब जी आज का जमाना जब बदल गया है, हाँ काम क्रोध दो मोह हो गया है, तो क्या करें, उसको तो छोड़ने वाले नहीं है ये लोग। नहीं तो क्या अच्छा तुमको क्रोध है ना तो क्रोध करो ना, हम मना नहीं करते। अच्छा तो तुम क्रोध करो, भगवान के ऊपर क्रोध करो। ओके अच्छा तुमको क्या है कि स्त्री के ऊपर बहुत आकर्षण है, हाँ तो क्या स्त्री को अपनी माँ को बनाओ ना, माँ की पूजा क्यों नहीं करते, वो भी तो स्त्री है।
जी तो इसमें क्या दिक्कत है? भगवान को आप विष्णु समझ सकते हो, राम समझ सकते हो, पुरुष समझ सकते हो, माँ क्यों नहीं समझ? तो मान क्यों नहीं समझ सकते? ठीक। राइट। अच्छा महाराज जी सवाल है, पूछो। हाँ महाराज जी एक सवाल है, पूछो। अरे पूछो ना ये भाई। श्री रामकृष्ण, हाँ जी महाराज पूछ रहा हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण दो शब्द में से बहुत ही विरक्ति प्रकाश करते, जैसे अगर उनको कोई गुरु बोल दिया, बाबा कोई बाबा बोल दिया, लेकिन जब महापुरुष महाराज जी उनको माँ बोल के भगवान श्री रामकृष्ण प्रसन्न होते थे और गुरु और बाबा में नफरत करते थे। वही है। This is not the relevant question. You are talking of something else. Not a relevant question. दिलीप भाई आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन महाराज जी मैं ये पढ़ रहा हूँ। I never objected to the worship of women who are the living embodiment of Divine Mother, whose external manifestations appealing to the senses have maddened men, but whose internal manifestations such as knowledge, devotion, discrimination, and disposition make men omniscient, of unfailing purpose, and a knower of Brahman. See, when pleased, becomes propitious and the cause of the freedom of man. महाराज जी ये समझ में नहीं आ रही है ये सेंटेंस पूरा। ऐसा है कि जब माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है, प्रोपिशियस होती है यानी प्रसन्न होती है जी, तब क्या होता है? वो क्या थी नीचे देखो लास्ट लाइन, when it becomes propitious. See, when pleased becomes propitious and the cause of the freedom of man. अगर माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाती है, इसीलिए बात है। अच्छा नहीं, ये अंग्रेजी में जो लिखा है वो जरा समझा दें एक बार। मैं हिंदी में कर रहा हूँ तुमको। नहीं, whose external manifestations appealing to the senses have maddened men, but whose internal manifestations such as knowledge, devotion, discrimination, and disposition make man omniscient on unfailing purpose and a knower of... ये नारी का बाहरी रूप तो आकृष्ट करता है ना, मोहित करता है, लोग इससे गिर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे माँ भी तो है, करुणामयी माँ है, त्यागमयी माँ है, माँ है, वो सब भी तो है इसके पीछे। नारी के अंदर कितने सारे सद्गुण हैं कि नहीं है? है कंप्लीट। और इसीलिए तो नारी को पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं जी। तो जब उसी नारी को जो आकर्षण करती है और मोह में डालती है, उसकी अगर आप माँ दुर्गा के रूप में पूजा करो तो कितना बहुत लाभ होगा। ओह राइट महाराज जी जी। Now question number 6, page number 215. After 5 or 6 years training in this mutt, the guardians of the girls may marry them. Maharaj, what is this? Guardian marry करें? सुनो, पहले स्वामी जी ने ये शारदा मठ प्रारंभ किया ना। हाँ, शारदा मठ यानी जैसे रामकृष्ण मठ पुरुषों के लिए है, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए शारदा मठ किया। अब उसमें दिक्कत ये थी कि अगर वहां पे डालेंगे तो लड़कियों की शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा? हाँ, तो लोग तो ये नहीं मानते थे, यानी सन्यासिनी होके रहेंगे, ये लोगों के मन में आ ही नहीं सकता था बात। हिंदू पुरुष सन्यासी होते हैं, सन्यासी नहीं थोड़ी होती हैं। तो इसलिए कहा कि 8-10 साल तुम्हारे यहाँ पे रह लो, उसके बाद में हम तुमको छोड़ देंगे, उसके बाद में तुम शादी कर लो, उसमें क्या। अच्छा, ये गार्जियंस ऑफ देयर गर्ल्स में मेरी धर्म है ना, ये गार्जियन है ना, माता पिता, उनके माता पिता उनकी शादी कर सकते हैं, उनके अभिभावक लोग, गार्जियन का शब्द होता है। राइट राइट। महाराज जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Maharaj ji,
page number 218, it is written, what are rigorous self-discipline? कठोर साधना, कठोर साधना। हाँ, बस सिर्फ यही वर्ड है, पर कठोर साधना क्या वो बता पाएंगे? अरे जैन लोगों की कठोर साधना देखो ना। अच्छा जी, फाउंडर्स ऑफ ऑल गुड अंडरटेकिंग। सुबह सुबह थोड़ा सा ध्यान करिए। उधर ही भैया वो भी थे ये ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ हे भगवान, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ मधुबाला जी बंद म्यूट करिए। कर दीजिए। मधुबाला जी म्यूट कर लीजिए। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ओहो ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ओहो ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਕਮੂਲੋ ਮੂਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ मधुबाला जी म्यूट कर ਕੋਈ लीजिए। ना हाँ महाराज जी, फाउंडर्स ऑफ ऑल गुड अंडरटेकिंग्स बिफोर दे लॉन्च ऑन their desired work must attain to the knowledge of the Atman through rigorous self-discipline. Otherwise, mistakes are bound to occur in their work. rigorous यानी कठोर, कठोर। हाँ, वो कठोर साधना यानी ध्यान खूब करना है, संयम खूब करना है। यानी ऐसा नहीं कि सुबह शाम बढ़िया खाना और 2 घंटे 15 घंटे आधा घंटे सुबह आधे घंटे ध्यान कर लिया और बाकी सब समय जो मस्ती में रहे, ऐसा नहीं। सारा जीवन रात का भी कम, रात को कम सोना, सुबह सुबह उठ के ध्यान करना, ये सब जो है ना कठोर साधना को बोलते हैं रिग्रेस। ओके राइट। हाँ महाराज जी, पेज नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 8। Have no fear, my son. You are not like ordinary worldly men, neither householders nor exactly sannyasis, but quite a new type. What is the meaning of this here? Quite a new type. क्या बीच में अब है ना, पहले के केवल 2 प्रकार थे ना। हाँ, पेज नंबर 200। सुनो दिलीप भाई जी जी, पहले क्या था? ब्रह्मचारी, हाँ, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसा था ना? क्या? हाँ, बस 3 थे हमारे। 4 थे। अब ब्रह्मचारी 25 साल तक ब्रह्मचारी रखा, फिर 20 वर्ष शादी कर लिया, गृहस्थ हो गया, उसके बाद वानप्रस्थी हो गया, सन्यासी हो गया। हाँ बराबर। अब बीच में एक और लगा दिया, एक गृहस्थ के बाद ब्रह्मचारी नहीं बन, सन्यासी गया, ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ में नहीं जा रहा जी। यानी 25 साल ब्रह्मचारी था, स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के बाद सन्यासी भी नहीं हो रहा है, गृहस्थ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये बीच का हुआ ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाँ, जो शादी नहीं करते जी, लेकिन साधु नहीं बनते। हाँ हाँ, है ना, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे। There are a lot of बस ये हो गए। Okay. Means this is the new type has come. हाँ, न्यू टाइप है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मेरा भी यही सवाल था महाराज। सारे लोग हैं। तुम्हें लाइन बता, तुम्हें एक लिस्ट बना दोगे? जी जी जी, वो तो मिल जाएगा। यस। हाँ महाराज जी, ये सवाल मेरा भी था कि न्यू टाइप क्या है? तो आप कह रहे हैं कि जो सन्यासी भी नहीं है और हाउस होल्डर भी नहीं है, मतलब शादी नहीं करी। हाँ। तो इसका मतलब उस टाइम डिसाइपल ने शादी नहीं किया था, इसलिए वो स्वामी जी बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उससे, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि there will be a new type. They will not enter into grahastha. अच्छा। But may not become sannyasi. Yes. अच्छा। ओ, मतलब they will not enter grahastha and they will not be sannyasi, वो unmarried स्टेट में रहेंगे बिना संन्यास लिए। ओके, ठीक है। और है ना, आजकल तुम्हें जानते हो, हम लोग तुमको बोलेंगे, तुम लिस्ट बना दोगे। बहुत सारे। जी महाराज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जी 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 महाराज। और सेवा करते हैं रामकृष्ण मिशन में, ऑनरेडी वर्कर्स के रूप में आते हैं, करते हैं, रहते हैं। बिल्कुल है तेरा। हाँ, there are a lot of people जो सेवा करते रहते हैं, शादी भी नहीं करते, सेवा करते रहते हैं।
Now question number 9, page number 221. Maharajji, is there any method to read fast and to remember word by word, sentence by sentence? Swamiji replies the question is brahmachari. How is it so? महाराज जी ये समझा दें कि ब्रह्मचारी, इन्होंने जवाब दे दिया है कि ब्रह्मचारी होंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। ऐसा है कि स्वामी जी जो है ना, ये अपने एक्सेप्शन थे। ओके, राइट। वो बचपन से ही बैठे रहते थे, टीचर पढ़ाता था, आंख बंद के सुन करके सुनते रहते थे। वो कहता थे क्या सुनता नहीं है, वो सब बोल देते थे जी। तो स्वामी जी एक एक्सेप्शन थे, पहली बात। दूसरी बात, बचपन से ही, कम उम्र से ही अच्छी तरह पक्का ब्रह्मचर्य करो तो उसके साथ में बाकी संयम भी करना पड़ता है। ये संयम अगर करोगे तो आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी कि नहीं होगी? होगी। बस ये बोल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बराबर। महाराज 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करने से वो मेधा नाड़ी 12 वर्ष तक। क्या भाई ऐसा है कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता मेधा नाड़ी से क्या मतलब। ब्रह्मचर्य करने से एक मेधा नाड़ी खुलती है, उसी स्वामी जी मेधा नाड़ी का मतलब, सुनो मेरी बात, संयम करने से यानी ब्रह्मचर्य इतना आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य यानी मन का पूरा संयम करना है, एकाग्रता करनी है, पूरे इंद्रियों करने से एक मन में स्पिरिचुअल पावर डेवलप होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेधा नाड़ी। कोई नाड़ी नहीं डेवलप होती। महाराज जी, शायद स्वामी जी was established in brahmacharya since birth itself. वो शायद yes. तो उनको कुछ करना नहीं पड़ा, उनमें तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। हाँ। और लोगों को करना पड़ेगा। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है सप्लीमेंट कि ब्रह्मचर्य डजंट मीन ओनली सेक्स रिलेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सब इंद्रियों का संयम। हाँ, सब इंद्रियों का तो नहीं। तो सर ये जैसे अभी इन्होंने पूछा कि स्वामी जी को जन्म से ये सब था, तो ये तो दिस इज बाय, ये स्वामी जी की बात छोड़ दीजिए। ओके, तो साधारण मनुष्य को बाय पासिंग ऑफ द टाइम they should control one by one as and when they realize। नहीं, बचपन से कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, बचपन से कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, सब इंद्रियों का। इसलिए आश्रम में जाते थे ना, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का आश्रम था, उसको गुरु के पास जाके रहते थे जी। तो जितने साल रहा वहां पे मन का संयम है, इंद्रिय का संयम है, सबको पता रहना, ये उद्देश्य था जी। स्वामी जी, yes, can I say something very inspiring? Yes, बोलिए। I recently met a person, he's married, but he's serving a Jain saint. He has a photographic memory, young boy. He can just remember. So it's not, it exists, this thing exists by pure. ऐसा है कि ये जैनिज्म में ये मेमोरी इत्यादि के ट्रेनिंग की अलग अलग बहुत सारी टेक्निक्स हैं। This is nothing to do with brahmacharya etc. It's a training. There are many trainings of mind. I know it. I understood that. स्मृति को कैसे बनाना, कैसे चीज याद रखना, ऐसे ट्रेनिंग से you go to आचार्य, उसको सिखाते हैं। Okay. Right. Okay. Maharaj, my question number 10 on page 222. ये जो दो नाम इन्होंने दिए हैं, भरत चंद्र एंड माइकल मधुसूदन दत्त, ये कौन थे, कुछ बता पाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता भाई, उनके बारे में कुछ नहीं जानता और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता। माइकल मधुसूदन दत्त बड़े कवि थे, बहुत बड़े कवि, बंगाल के बहुत बड़े कवि, काव्य लिखे हैं उन्होंने। वो क्या है कि मधुसूदन नाम था उसका, वो क्रिश्चियन होकर माइकल मधुसूदन दत्त हो गए थे, क्रिश्चियन हो गए थे।
हाँ कन्वर्ट हो गए थे, क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे, कवि ववि थे, क्या थे बंगाली। हिंदू थे पर क्रिश्चियन पेट के कारण हुए थे। और वो he- काव्य ग्रंथ लिखे थे मेघनाथ। हाँ चलो चलो आगे चलो। Maharaj ji, my last question on page number 227, last paragraph, उसका मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश तो लिखा है। अब की बार स्वस्थ होने पर हृदय का रक्त देकर माँ की पूजा करूंगा। रघुनंदन ने कहा, नवम्या पूजयते देवी कृत्यवा हृदय कर्दमम। अब मैं वही करूंगा। माँ की पूजा छाती का रक्त देकर करनी पड़ती है, तभी वो प्रसन्न होती है और तभी माँ के पुत्र वीर होंगे, महावीर होंगे। निरानंद में, दुख में, प्रलय में, महाप्रलय में माँ के लड़के नीरव बने रहेंगे। महाराज जी ये समझा देंगे सेंटेंस? बहुत सही लिखा हुआ है। मतलब ये है कि हमको तेजस्वी होना चाहिए, हीरोइक होना चाहिए, और जो भी कर्म करे, जो भी कार्य करे, चाहे वो धर्म के लिए होवे, अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार होना, इसीलिए। ठीक, बिल्कुल बहुत सही। चलो देवाशीष साहब। लिटरली हृदय रक्त नहीं। ठीक है दिलीप भाई, देवाशीष साहब। बहुत होगा महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम देवाशीष, हाँ प्रणाम। you have asked question at the last moment. It should not be like this. फ्राइडे ठीक है, अगले बार से और थोड़ा जल्दी करूंगा। हाँ महाराज जी, 1 मिनट। हाँ महाराज जी, मेरा पहला क्वेश्चन था पेज नंबर 213, what is said about the women worshipping in tantra? Yes. वो तंत्र में ये तो कहा है कि माँ देवी की पूजा करनी चाहिए, अभी तो नारी की पूजा देवी के रूप में करनी चाहिए, ये कहा है मंत्र में। ये पहले तो वेदों इत्यादि में नहीं था। वेद में एक तो एट द मोस्ट नारी जो है वो टीचर बन जाती थी या थी, लेकिन वेदों में ये तो नहीं कहा कि नारी को जो है वो भगवान देवी से पूजा करना चाहिए। ये तंत्रों की देन है। यहाँ तक कि वहाँ पे वाइफ को जो है वो देव पूजा कर लिया, उसके बाद में वाइफ की तरह व्यवहार नहीं करना है उसके साथ में। ये तंत्र की बहुत बड़ी देन है। विमेन के प्रति लोगों की जो भावना है कि वो भोग का उपाय है, ये उसके बदले वेदों ने, तंत्रों ने कितना बड़ा हमको उपकार किया है कि नारी को ऊंचा पद प्रदान किया। इसका मतलब वेद का युग का व्यापार है, आफ्टर वेदस। नहीं, चंद्र तो बहुत पूर्व बाद में आया ना। अरे भाई वेद के ऊपर नहीं, वेद तो सबसे ऊपर है। आई एम नॉट लिसनिंग टू, वेयर इज योर माइक? हे भगवान, आई एम नॉट लिसनिंग यू, वेयर इज योर माइक? कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, क्लोज टू यू। हाँ महाराज जी, मैं चेक पे हाँ अभी तो ऑन तो है माइक। हर रोज तो ऐसे ही करते हैं, आज भी तो ऐसे ही। आपका ब्रेक कर रहे हैं महाराज जी। ब्रेक, व्हाट इज दिस? तुम्हारा ब्रेक कर रहा है। बोलो। अच्छा, बोलो, मैं अभी हरिद्वार में हूँ महाराज जी। पेज नंबर करो ना, आगे चलो, प्लीज कंटिन्यू। Question number 2, page 217. From the text, when the mind is wholly merged in homogeneous and undifferentiated Brahman, such ideas that this is a man and that a woman does not remain at all. The question, one should have Maharaj, मेरा क्वेश्चन नहीं है। You are not audible, Devashish.
कनेक्टिविटी का इशू है महाराज। One should have good meditation देवाशीष वीडियो ऑफ करके सवाल करो, वीडियो ऑफ कर दो, साउंड नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ करके सवाल करो। differentiation will vanish and the atrocities on women will be stopped. But this most अरे भाई कुछ नहीं आ रहा है। देवाशीष यू आर नॉट ऑडिबल, वो सॉल्व ब्रेकिंग। Not possible. महाराज जी मेरे सवाल भी रह गए हैं बाय द वे। बोलो बोलो करो, वो तुमने भेजे नहीं थे ना? मैंने भेजे थे महाराज, आपने रिसीव भी किया था। अच्छा बोलो तो चलो ले आओ, आ जाओ, मैंने तो आया नहीं। मेरा नहीं, आ नहीं आया था रहा, आवाज नहीं आ रहा क्या? नहीं अब आया बोलो। हाँ महाराज जी, मैंने जो अभी एक सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मैंने पूछा था, 1 मिनट 2 मिनट 30 1 मिनट महाराज जी, 1 मिनट 300719। हाँ 1 मिनट महाराज जी। हाँ मेरा सेकेंड क्वेश्चन था महाराज जी, when the mind is wholly merged in homogeneous and undifferentiated Brahman, such ideas that this is a man and that a woman does not remain at all. Can you, महाराज जी आपने सुना है क्वेश्चन? Yes, बोलो आगे चलो। My question is, तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? My question is, one should have good meditation to achieve this state. Then only the differentiation will vanish and the atrocities on women will be stopped. But this is most unlikely to happen in society for 99%. What is the way out? For majority of the people, तुम्हारा टीवी को ठीक करो, गंदा टीवी दिखाओ मत, बंद करो, मीडिया को ठीक करो, ये है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, ये तो फॉर 99% लोग, ओनली 1 or 2% लोग जो है वो सब तरफ भगवान देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल तो नारी दिखती है उसको, और नारी जो है वो नरक की खान, नारी जो है वो जो है वो आकर्षण करने वाली होती है। तो इसलिए इन सब बातों को मत लो, नारी को भगवान माँ देखने का अभ्यास, उनको शिक्षा देनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ टीवी वगैरह के साथ में। ओ ठीक है ना, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। मालिनी महाराज जी मेरा रह गया महाराज जी, मैंने तुम्हारा मेरे पास लिखो, बोलो तो बोलो। हाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज महाराज पेज 218 में है, वहाँ स्वामी जी स्पीकिंग अबाउट फीमेल एजुकेशन और कहते हैं बट नाउ फीमेल एजुकेशन इज टू स्प्रेड विथ रिलीजन एज इट्स सेंटर, ऑल अदर थिंग्स शुड बी सेकेंडरी टू रिलीजन। नाउ मेरा सवाल यह है, व्हाट इज एजुकेशन सेंटर्ड अराउंड रिलीजन? भाई ये कहना बड़ा मुश्किल है, आई कैन नॉट टेल यू दिस। सेंटर एक्चुअली रामकृष्ण मिशन और स्वामी जी के आइडियाज जो हैं वो तो ऑल आर सेंटर्ड ऑन रिलीजन, वेदर इट इज नारायण सेवा है, सेवा भी तो है वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड हो गई, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब रिलीजन से बेस्ड हो गई। उसी प्रकार से नारी का एजुकेशन भी जो है वो भी रिलीजन में, वो कॉलेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस शारदा मठ चला रही है, शारदा मठ ने माँ शारदा को उनका आदर्श बना दिया है, ये हुए रिलीजन बेस्ड एजुकेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ महाराज जी, निवेदिता स्कूल्स जो है, सो दे हैव कम आउट ऑफ द शारदा मठ, तो हाउ आर द शारदा मठ एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर एजुकेशन?
ये वो रिलीजन बेस्ड है। ये रिलीजन बेस्ड एजुकेशन तो साइंस ही पढ़ाना महाराज पड़ेगा। मैं बताऊं, महाराज हाँ, मैं बताती हूँ, हाँ बताइए। क्योंकि मेरी बहन भी जो दीदी है वहाँ की, वो निवेदिता स्कूल हाँ बोलिए। हाँ के चीफ सेक्रेटरी है। वहाँ का जो हाँ। मुखस्थ है बिल्कुल इतने सुंदर से उनका जीवन चलता है। निवेदिता के उपदेश, स्वामी जी के उपदेश सब कंठस्थ है बच्चों को। मतलब उनका अगर कोई प्रोग्राम देखेंगे ना तो एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। पूरा बेसिक एजुकेशन चरित्र निर्माण के लिए है, बहुत ही सुंदर है। मतलब उपनिषद के कितने मंत्र एकदम रट्टम रट्टा है उनको। हो गया संजय। हाँ सुबीर। हाँ माँ ठीक है। वो वहां पे उसको स्वामी जी और माँ की शायद टीचिंग्स वहां पे पढ़ाते रहते होंगे पूरा, हाँ शुरू से। तो वो धीरे धीरे उनके एजुकेशन के साथ साथ उनके रक्त में घुस जाता है। हाँ, ब्लड में आ जाता है। हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग में आ जाता है। ठीक है, बिल्डिंग में आ जाता है। हाँ। मेरा दूसरा सवाल का जवाब मिल गया महाराज जी। वो जो हम बात कर रहे थे ए न्यू टाइप बिटवीन सन्यासी एंड हाउस होल्डर, उसकी बात तो हो हाँ, वो तो बताया था। तो उस सवाल को नहीं करेंगे। एंड माय लास्ट क्वेश्चन वाज पेज 223 में 19th सेक्शन में, स्पीकिंग अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेघनाथ वध काव्य of Michael Madhusudan Datta, he seems to be glorifying Ravan's heroic nature. He says, come what may, I shall not forget my duty, whether the world remains or dissolves. ये जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है, रावण को ग्लोरीफाई किया है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वो काफी उनके बोल रहे थे, come what may, I shall not forget my duty, whether the world remains or dissolves. I am unable to somehow accept it, क्योंकि to me it seems Ravan's attitude is more out of ego rather than duty. आप क्या सोचते हैं महाराज जी? नहीं, वो स्वामी जी ये बता रहे हैं कि मेघनाथ का वध होते हुए भी, यानी इतना बड़ा आघात करते हुए भी, अच्छा, उसका जो है उसमें मोह नहीं, वो डिप्रेस नहीं होगा। ओके। यानी मेघनाथ वध जैसे इससे बड़ा हानि और हाँ, पुत्र शोक नहीं हुआ। में भी वो पुत्र शोक से अभिभूत नहीं हुआ। मैंने कहा जो भी कुछ होगा नहीं, दैट इज द ओनली। he overcame the mental condition of पुत्र शोक। सबसे भयानक दुख जो है उसको भी उसने ओवरकम किया। And he loved his guts. He loved his strength and guts. अच्छा, अब चलिए, और कुछ है? That's all महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। और कोई तो नहीं है? शुरू बंद करें। स्वामी जी मेरा बच्चा है। हाँ, मालिनी का बच्चा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ। Swami ji, this is a very daring question, but I am nevertheless trying. Jesse ke Swami ji said, I shall make a firm resolve. On the morning of the day, I shall begin this treatment, not to take any water. After that, no water will pass down the throat anymore. And the beauty of Swamiji was like, if he told his mind something, the body was a total slave. Now, my question here is, like you said, always aim for the moon. So I'm going by that definition. That, Swamiji, how can we step by step, why can't we aspire and try and get that kind of mastery over the ऐसा है कि you don't compare. There are two things in this. Yes. First is, Swamiji is an ideal, no doubt about it. Yes, and we must try to aspire to become like Swamiji. Yes. But secondly, you must also realize that he was a god. He was a Saptarshi, from a Saptarshi. Yes. And for him, this determination, if I think that I will not take water, my water will not go inside even if I try to do it. That is Swamiji. It was natural for same Swamiji. He did not need to practice it,
All these Yes, things, yes. control, complete control Yes. of mind was natural to Yes. Swamiji. But so far Yes. as we are concerned, we Yes. have to do sadhana. There is no other way out. Yes. But Yes, we don't even, we are not able to sit quietly. We are not able to control our mind. We must repeatedly, continuous whole life must become a sadhana. Thinking, Yes. getting up, moving about, everything must be Yes. fully disciplined. control, And Yes. this has to be started at the young age, early age. Yes. early age, not at this Yes. age of 60 and 80. You know. जी, जी. Yes. So that is the Yes. answer to your question. Is that okay? Yes. Yes, yes. Thank you, Swamiji. Pranam. Okay. महाराज जी एक चीज कहना था मुझे, ये हाँ. जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, हाँ, ये जो डिसाइपल है उनके सवाल से हमें काफी फायदा तो जरूर हो रहा है, लेकिन एक चीज जो उठ के आ रही है कि उनके हर चीज में एक नेगेटिविटी नजर आती है। जैसे कि उन्होंने फीमेल एजुकेशन पे जितने भी सवाल किए, ओनली ही वाज टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेकल्स कि क्यों नहीं करना चाहिए, और ये एटीट्यूड उनका बराबर कैसे रहा? अब पता नहीं बाबा, ये बंगालियों का होता होगा, मैं नहीं जानता, तुम पता लगा। ये ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स। He was a cutter he was. One thing is better because हमको फायदा हो रहा है, हमको आंसर मिल रहा है। हम लोगों को फायदा हो रहा है ऐसे सवाल से। हाँ, हमको फायदा हो रहा है। अच्छा निवेदिता, That's why he is asking. जी महाराज। तुमने क्या पूछा था? कुछ एक पूछने वाली थी या क्या कर रही थी? और मैंने लिखा है कि टॉक टू निवेदिता टू राइज अबाउट सोशल कन्वेंशंस. Whether you are going somewhere, whatever is it, something you no? नहीं मुझे तो मिला नहीं। नहीं मिला नहीं, मैंने सोचा है नोट लगा रखा है कि इधर विल बी टॉक टू यू समथिंग पर्सनल. ओके, हाँ आपने बोला है तो इसके बाद बात करेंगे मनोबुद्ध अहंकार के। अच्छा वही तो ये हम बंद करते हैं, उसके बाद तुमसे पर्सनल बात करें. ठीक है। ओम शांति 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 शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. जय हो. ओके, जय हो. महाराज जी प्रणाम।